functions K and A. That is, K stands for capital, and L stands for labor. So what does it mean? ये कहता है कि प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है, मेनली हम लोग दो फैक्टर्स को लेकर चल रहे हैं, वो एक कैपिटल और एक लेवल। ये क्या है? के फॉर कैपिटल एंड एल फॉर लेबर। तो इसे हम लोग कहते हैं कि कैपिटल और लेबर के प्रोडक्शन, लेबर के मदद से जो हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, मूविंग अहेड, and now the concept is one economist, that name is Kitsionis. Kitsionis. He gave a definition of production function. The production function is purely a technical relation which connects factor input and factor output. So this is the definition given by Kitchianis. He told that कि production function is a purely a technical relation. अगर हम ये production function की बात करें, तो वो उन्होंने ये कहा कि production function basically क्या है? एक technical relation है जो connect करता है किसको किसको? factor input and factor output को। ठीक है? Now moving ahead and just knowing the difference between fixed factor and variable factor. So fixed factor and variable factor क्या है? What is the difference between fixed factor and variable factor? How will we know? How will we get to know about the fixed factor and variable factors? How we will recognize the fixed factor and variable factor? So before talking about fixed factor and variable factors, let's talk about first short run and long run, and then after that we will jump to the topic fixed factor and variable factor. Not a topic, basically a concept. कि जब तो हम शॉर्ट रन की बात करेंगे, शॉर्ट रन देखेंगे, फिर लॉन्ग रन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, तो ताकि हम अच्छे से समझ पाए फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो थोड़ा लॉन्ग रन के समझ लें। तो शॉर्ट रन क्या कहता है कि शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम is a period of time when production can increased by increasing the application of increasing the application of increasing the application of variable factor. ओके, तो ये क्या है? ये होता है शॉर्ट रन। वही फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? या फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होता है, या लॉन्ग रन वो होता है कि जब इन लॉन्ग रन is a period of time when production can be increased by increasing both the factors, both the application of factors. Here there is no concept, in the long run there is no concept of fixed factor and variable factor. Basically fixed factor, अब बात करते हैं कि fixed factor क्या होता है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को देख लिए कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि एक जो वेरिएबल होता है जिसको हम लोग लेबर कहते हैं,
वो क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है. व्हाई इट इज वेरिएबल? बिकॉज इट इज इजी टू increase the number of factors in the short period, but in the long period it is but in the short period it is quite difficult to manage the fixed factor. Okay, what is fixed factor? Fixed factor we can say like a machine. Example, like a machine. Okay, like a, we can say a land. Okay, like we can say a building in which production is taking place. Okay, so this is quite difficult to manage all those fixed factors in quite a short period, because we don't have money at in the short period, we don't have time basically in the short period to adjust or to keep increasing the fixed factors. But in the but in the short period, lever, that is variable factor, that's why it is known as variable factor. But because it is quite easy to increase or decrease the number of labor or the raw material. Okay, so raw material is also example of variable factors. Okay, so this is what variable factors, like a raw material, is it? रॉ मटेरियल भी एक एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग शॉर्ट रन में कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट शॉर्ट पीरियड. So in short period only in short period we can make a difference between fixed factor and variable factor. Is it quite I think enough to make you understand the difference between fixed factor and the fixed factor and variable factor on the basis of short term period or long term period. Okay, so now as I told you earlier that long period or long run concept, long period is what? Long period is, we can say long period, both the factors, that means capital and labor, both the factors, that means capital and labor as well, both acts as what? Both act as variable factor. Why? I told you earlier in the earlier slide. Again, I am telling you why it is capital and labor factors act as the variable factors, because in the long run we have enough time, or producers have enough time to make an adjustment in both the factors, capital and that is labor factor. Okay. Now, moving ahead, and let's see in actually we can say like if we take a production function, that is Q is equal to, that is function of capital and labor, then how on the basis of mathematically how we can say that is fixed factor and this is variable factor. So keep in mind that if we take K bar, okay, so this K bar is refers to what? Fixed capital. Okay, that is capital is constant here, and we can't change any we can't change in capital, or we can't make any adjustment in capital. So this K word is what? This K word is refers to fixed capital, whereas only L, that is no var here, no we can say no var, that means this is variable factor. Okay, variable factor, we can make any kind of adjustment in this. Okay, so Q is a function of K and L, that is K bar. K, this telling this is short period or short run production function. Okay, if you don't like short period, you can write it down like a short run production function. Okay, now come to the point, that is short run production function. We can write it like down. We can write it like this: short run production function. ओके, इसे हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज इन द मैथमेटिकल केस वी कैन राइट इट डाउन लाइक शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ मूविंग अहेड, एंड let me tell you by the diagram. Okay, so we can say this is what? This is capital. Okay, on the vertical axis we here took capital, and we here took labor. Okay, so at this point, that is K1 is capital 1, and L1 is labor 1. Okay, initial point, and the K2 is capital and L2 is labor. So this is showing here the variable factor. Variable
factor ratio. What does it mean? It does mean that uh, if we take the ratio of both the factors, that means capital or labor. As we all know, in the short run, we can make adjustment in only in labor factor. Okay, so if we keep capital constant and L, that is labor. If we keep capital constant and L is labor, then we can say this is what, this is vary. Okay, this factor is just varying. So this is what variable factor. हम्म क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर जो है कांस्टेंट है जिसको हम लोग कैपिटल माने हैं, और वो है शॉर्ट पीरियड में हम एक किसी भी प्रकार का एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जस्ट हैविंग शॉर्ट पीरियड. बट लेबर एक ऐसा फैक्टर है या रॉ मटेरियल एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं. इसलिए जब कैपिटल को कांस्टेंट रखेंगे और लेबर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो पूरा जो रेशियो है वो बढ़ेगा या घटेगा अकॉर्डिंग टू कि हम लेबर में बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं. अगर लेबर को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, घटेगा, और अगर लेबर को कम करेंगे तो क्या होगा, पूरा रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा. दिस इज वाई बिकॉज दिस फैक्टर द रेशियो ऑफ बोथ द फैक्टर्स इज जस्ट वेरिंग, जो दिस वी कैन से वेरिएबल फैक्टर रेशियो. ओके, so here you can see capital is constant, that is horizontal or parallel to the x-axis. Okay, but labor is just moving from L1 to L2. Okay, and capital is here constant. You can see capital is constant at in changing L1 and L2. Now, as I told you, the long run production function. Now coming to the concept of, so three vital difference. Let me tell you the basic difference of how we can bifurcate between short-run production function, long-run production function, and also in short-run production function, this is known as returns to a factor, and the long-run production function in long-run production function basically known as we can say returns to a scale. Okay, returns to a scale. हम लोग देखते हैं कि returns to a scale और returns to factor में क्या अंतर है, कौन से शॉर्ट रन में आएगा और कौन सा लॉन्ग रन में आएगा. नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट, थ्री वाइटल डिफरेंस between short run production function, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन का एक थ्री डिफरेंस है, वो हम लोग देखते हैं. एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, तो वाइटल डिफरेंस फर्स्ट, नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, keep in mind that short run production function is variable proportion type production function. While जबकि द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. इज इट सो? ठीक है, ये कहता है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. कीप इन माइंड,
इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो इसमें होता है वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। क्यों वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप? क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या रखते हैं, एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं और लेबर को क्या रखते हैं, वेरिएबल। ठीक है, इसलिए जब भी हम इसके रेशियो की बात करेंगे तो ये कैपिटल कांस्टेंट होता है और इसके लेबर में जो है घटाएंगे बढ़ाएंगे, लेबर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो इसकी फैक्टर रेशियो जो होगी बढ़ेगी या घटेगी अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि ये वेरी करता है रेशियो। ठीक है, तो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। जबकि लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है, लेट मी टेक अनदर स्लाइड। लॉन्ग रन में क्या होता है, इन लॉन्ग रन कैपिटल एंड लेबर जो होता है ये दोनों वेरी करता है, ये भी वेरी करता है, ये भी वेरी करता है। तो ओवरऑल इसका रेशियो जो है, ये दोनों के फैक्टर का रेशियो जो है कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में इसे भी बढ़ाते हैं और इसे भी बढ़ाते हैं तो इसका रेशियो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्योंकि लॉन्ग रन में वी हैव इनफ टाइम और प्रोड्यूसर्स हैव, वी हैव इनफ टाइम टू मेक to make adjustments in both the factors, okay. Now moving ahead, and another difference we can see, vital difference, another difference, vital difference टू। ओके, अब दूसरा डिफरेंस देखिए, एक होता है शॉर्ट रन में स्केल ऑफ आउटपुट, स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट। जब भी हम स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट की बात करें तो हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं और किस पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ शॉर्ट रन। ठीक है, इन केस ऑफ शॉर्ट रन वी आर टॉकिंग स्केल ऑफ आउटपुट। तो इन केस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, is it so? Now while it change in case of long run production function, while it change in in case of long run प्रोडक्शन फंक्शन, इज इट सो? और शॉर्ट रन में क्या होता है, एक स्केल ऑफ आउटपुट होता है। अब ये स्केल ऑफ आउटपुट क्या होता है, स्केल ऑफ आउटपुट इज इंडिकेटेड बाय द साइज ऑफ द प्लांट। ओके, स्केल ऑफ आउटपुट is indicated by the size of the plant. Indicated by the size of the plant. ठीक है, जैसे कि हम लोग फिक्स फैक्टर की बात करें तो फिक्स फैक्टर में क्या आ गया, कैपिटल आ गया, मशीन आ गया, बिल्डिंग आ गया, लैंड आ गया। वी कांट चेंज capital, machine, land, whatever that is cannot be changed, that cannot be changed in the short period, so scale of output बोलते हैं। तो scale of output जो होता है वो constant होता है, मतलब कि fixed factor जो होता है ये always constant, keep in mind fixed factor remains always constant in short period। Okay, again and again I am just repeating this word, that in short period there are no any scope to change in fixed factors। okay, जबकि प्रोडक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। नाउ अनदर वाइटल डिफरेंस, दैट इज थर्ड vital difference, short run production function
exhibits returns to a factor, returns to a factor, while the long run production function exhibit returns to a scale, exhibits returns to a scale. ओके, अनदर डिफरेंस की बात करें शॉर्ट रन एंड पीरियड में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पीरियड में, तो क्या होता है कि शॉर्ट रन पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, वाइल रिटर्न्स टू लॉन्ग रन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है कि आउटपुट जो है हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, आउटपुट जो है आउटपुट को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट एंड लेबर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। ओके, तो बिहेवियर ऑफ आउटपुट जो है बेसिकली रिस्पॉन्स करता है, बिहेवियर ऑफ आउटपुट में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन लेबर, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है, कि हम लोग अगर एक लेबर या एक फैक्टर में चेंज करने के कारण हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ रही है तो हम लोग उसे रिटर्न्स टू फैक्टर करेंगे। बट लॉन्ग रन की बात करें तो आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन की बात करें तो आउटपुट जो है हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन कैपिटल एंड लेबर। ओके, तो एक फिर से एक डिफिनेशन देख ले शॉर्ट रन, इट विल हेल्प इन एग्जाम्स, शॉर्ट पीरियड, एक अच्छे से लिखवा देते हैं, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, इतना समझ आ गया होगा। अब हम लोग इतना समझ में आ गया होगा कि क्या क्या किसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन में क्या किसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है और वेरिएबल प्रोपोर्शन का प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये सभी चीजें समझाने के बाद अब हम लोग एक डिफिनेशन एक तरह से ब्रीफ में लिख लेते हैं समरी ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का, सो दैट इट विल मेक यू हेल्प इन एग्जाम। लॉन्ग रन long run production function, short run production function and long run production. So the first difference is, first definition in the short run production function, it is a production function in which factor ratio tends to change with change in volume of factor. Okay, it is a production function in which factor ratio tends to change with change in the volume of output. जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में चेंज होगा तो शॉर्ट रन में क्या होगा, जो इसका फैक्टर रेशियो होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ K लेबर। ओके, तो इसको जब हम K अपॉन L लेंगे, दैट इज K इज कैपिटल हियर इन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन K इज कैपिटल, सो L इज चेंजिंग, okay, L is increasing, accordingly output will also respond, accordingly output will also respond on the basis of labor increasing or decreasing. Okay, so this is what, this is, we can say, factor ratio change. Okay, now second, output is increased by, output is increased by increasing the
increasing the application of one variable factor only. Now third, scale of output remains same or constant, whatever you can say conveniently, okay? No matter what the level of output, what the level of output. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर जो होता है, दैट इज कैपिटल और मशीन और लैंड व्हाटएवर, ओके, दैट इज फिक्स, वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, वो मैटर ये नहीं करता कि आपका आउटपुट लेवल क्या है। मान लीजिए इनिशियली हम लोग क्या, मतलब मान लीजिए इनिशियली प्रोडक्शन क्या किया, जीरो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, जीरो प्रोडक्शन, ठीक है, दैट मीन्स नो प्रोडक्शन, वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, मतलब आउटपुट जो है क्या है, जीरो है, आउटपुट जो है क्या है, जीरो है। उस केस में हमारी फिक्स फैक्टर क्या होगी, फिक्स फैक्टर का जो कॉस्ट होगा वो लगेगा ही, ठीक है। मान लीजिए प्रोड्यूसर ने पहले सोचा कि मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, लेकिन प्रोड्यूसर जो अभी प्रोडक्शन स्टार्ट किया नहीं है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले उसे क्या करना होगा, कैपिटल जो मशीन जो है वो स्टैब्लिश करना होगा, लैंड वगैरह एक परचेस करना होगा, लैंड वगैरह को देखना होगा, ठीक है, या कौन सी जगह पे, कौन सी जगह पे प्रोडक्शन करना है, कौन से स्थान पे प्रोडक्शन करना है, उसके लिए बिल्डिंग वगैरह देखेगा। भाई प्रोडक्शन हवा में तो नहीं हो जाएगी, मशीन्स वगैरह स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, बिल्डिंग्स लगाने, मतलब बिल्डिंग्स में प्रॉपर देखने पड़ेंगे, लैंड वगैरह जहां भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर होता है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं या नहीं, आउटपुट प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कैपिटल क्या होगा या फिक्स फैक्टर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर जीरो लेवल पे भी फिक्स फैक्टर वही होगा, और अगर आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी फिक्स फैक्टर वही चीज होगा, ठीक है, देयर विल नो चेंज इन फिक्स फैक्टर। बट हाँ, अगर बात करें वेरिएबल फैक्टर की तो वो क्या होगा, हाँ, बात वेरिएबल फैक्टर की बात करें, वेरिएबल फैक्टर में क्या होता है, अगर प्रोडक्शन और आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल जीरो हो जाएगा, वेरिएबल फैक्टर विल कॉस्ट नो, वेरिएबल फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें वेरिएबल फैक्टर को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर को भी बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लीजिए एट द लेवल ऑफ जीरो आउटपुट, जीरो आउटपुट मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो एक भी लेबर नहीं है। भाई जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कौन करेगा, लेबर करेगा, ठीक है, लेबर की मदद से, लेबर ही फैक्ट्री में काम करेगा, उसकी मदद से हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आउटपुट ही नहीं हो रहा है तो लेबर को हायर करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आ गया, ठीक है, अचानक से ऑर्डर है कि 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो क्या नंबर ऑफ लेबर्स को हम लोग हायर करना शुरू कर देंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ हायर लेबर्स को प्रोड्यूसर जो है हायर करना शुरू कर देगा। तो ये क्या होता है, चेंज हो रहा है, पहले आउटपुट जीरो था तो नो लेबर, अब आउटपुट जो है 100 यूनिट्स हो गया, तो हम लोग लेबर को इंक्रीज कर दिए, नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ा दिए, ओके। तो यही होता है शॉर्ट रन। वन थिंग ऑल्सो नोट इट डाउन, इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन known as, or we study short run production functions, short run production function is studied with reference to returns to a factor, ठीक है। शॉर्ट रन में क्या होता है, हम लोग रिटर्न्स टू फैक्टर के रेफरेंस पे पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन।
So they will see in long run production function as seen in short run production function. Short run production function में जब हम लोग डिफरेंस देखा तो ये डिफरेंस था कि कैसे कैसे हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्ट रन है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में रेशियो क्या होता है, फैक्टर रेशियो वो चेंज होता है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग जब भी हम लोग आउटपुट को इंक्रीज करते हैं इन द शॉर्ट रन, so we always vary or we always using increasing number of labor, okay, keeping capital constant. And the third difference is what the third difference we were seeing, that the scale of output remains always constant. Scale of output matlab fixed factor. And the fourth last difference is that is production function is studied with reference to a returns to a factor, okay, returns to a factor में देखते हैं शॉर्ट रन में। बट अगर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज। फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज, फैक्टर रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, इज इट, विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अगर हम आउटपुट में भी चेंज करें तो फैक्टर रेशियो जो होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। अब कैसे कांस्टेंट रहेगा ये देखते हैं। मैंने क्या कहा कि प्रोडक्शन फंक्शन इज व्हाट, इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। That means this is what, this is mathematically, okay. Now if we see the ratio of capital and labor, so we know, and I told you in the earlier slide, in the long run, that is long run we have enough time, or we can say producers have enough time to make adjustment on fixed factor and variable factor. So there is no concept of fixed factor and variable factor in the long run. Why? Because in the long run, both the factors become variable itself. Both the factors become variable itself. Okay, दोनों factor जो है variable बन जाता है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है लॉन्ग रन में कि एक फिक्स है एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में वी प्रोड्यूसर्स हैव इनफ टाइम टू मेक एडजस्टमेंट। We are I am again repeating this word, that don't forget it, okay, don't forget in the long run both the factors becomes variable factor, that is capital and labor. So if we change capital and labor, if we make adjustment accordingly, then we can say this factor ratio will also change, but at constant rate, okay, but at constant rate. That's why this is known as constant. The factor ratio does not change with change in the volume, or we can say factor ratio becomes constant, okay. Now second point, that is output is increased by increasing the application of all the factors. In this long run production function, we can make adjustment or we can increase output by increasing the application of both the factors. Output is increased, output is increased by increasing the application of all the factors. Is it so? Now that the third, the scale of output tends to change. स्केल ऑफ आउटपुट क्या होता है, मैंने बताया, ठीक है, कि स्केल ऑफ आउटपुट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स कैपिटल को बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि स्केल ऑफ आउटपुट वो चेंज होता है, मतलब जो हमारा फिक्स फैक्टर जो शॉर्ट रन में बताया था वो चेंज होता है। देयरफॉर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, बिकॉज इन द लॉन्ग रन itself we know, and I told you, and again I am repeating this word, that fixed factor and variable factor both becomes variable in the long run, okay. Scale of output change, scale of output change with the change in the level of output. Now fourth, long period production function is studied with reference to returns to scale. Long
period production function is studied with reference to with reference to returns to scale. फिक्स शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा कि रिटर्न्स टू फैक्टर के रेफरेंस से पढ़ रहे थे, लेकिन लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में हमेशा हम लोग रिटर्न्स टू स्केल पे के रेफरेंस पे बात करेंगे. इज इट सो? नाउ moving ahead, this is all about the difference between short run and long run in a summary, or I just take this long run and short run concept, and I note it down in one slide so that it will be convenient for you to note it down in the copy, so it will further make you help in exams. Okay, now seeing to TP. What is TP? That is total product. Total product. Now talking about what is total product and what is marginal product and what is average product. Okay, marginal product and AP, that is average product. Marginal product, total product and average product. Now coming to the point, what is total product? So let me tell you the concept of TP first. Okay, so TP is the sum total of output. TP is the sum total of output, sum total of output produced by all the units of a variable factor along with some constant amount. With some constant amount of the fixed factors used in the process of production. In the process of production. So this is what? This is total production. Total production basically says the sum total of output produced. क्या? Sum total of output. That is, if Q1 is producing in one period, if Q2 is producing two period, and Q3 is producing in third period, if we do summation, that is summation of all the output. So this is what total product. Okay, so total product is the sum total of output produced by the all units of variable factor along with the constant amount of the फिक्स फैक्टर. अगर हम कैपिटल और लेबर की मदद से जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे का जब सारे आउटपुट को समेशन करेंगे, टोटल करेंगे, दैट इज व्हाट टोटल प्रोडक्ट. ओके, नाउ marginal product. Marginal product. Now MP refers to change in TP when one unit when one more unit when one more unit of the variable refers to change in TP when one more unit of the variable factors is used.
एमपी बेसिकली जो है, एमपी कॉन्सेप्ट जो है शॉर्ट रन के लिए होता है, ठीक है, मैं बता दूं, शॉर्ट रन के लिए होता है। एमपी जो है फिक्स्ड लॉन्ग रन में जो होता है, ठीक है, ये लॉन्ग रन में जो ये कह सकते हैं कि फिक्स फैक्टर के लिए क्या होता है, फिक्स फैक्टर के लिए एमपी क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। क्यों? और ये जो एमपी जो होता है वेरिएबल फैक्टर के लिए, वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट टर्म में बेसिकली आता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि फिक्स फैक्टर के लिए अगर एमपी देखे जाए तो 0 होता है, और वेरिएबल फैक्टर जो एमपी जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से रिलेट करता है। आगे बताते हैं कि एमपी रेफर्स टू व्हाट, मार्जिन प्रोडक्ट रेफर्स टू व्हाट, रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आता है, क्यों, जब जब वन मोर variable factor add one more variable factor add, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट वेरिएबल फैक्टर ऐड करते हैं तो उससे उस मदद से हमारी टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ एमपी। एमपी वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला देखें तो वी कैन राइट इट डाउन, एमपीएन इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। दिस इज व्हाट, this is second formula of MP, margin product. So MP, again telling you the definition, MP refers to change in TP when one more unit of the variable factor is used. जब एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हैं और फिक्स फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, तो उसके कारण वन मोर वेरिएबल फैक्टर ऐड करने के कारण जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आए, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एमपी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब टोटल प्रोडक्शन को हम लोग टोटल यूनिट ऑफ गुड्स से मल्टीप्लाई, टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड करें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। सो एपी इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एपी इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को हम लोग बोलते हैं एपी। तो एपी का फॉर्मूला है एपी इज इक्वल टू टीपी बाई एल। टीपी इज व्हाट, टोटल आउटपुट L is what, units of the variable factor. So this is average product. Now again I am telling you the definition, another definition of AP. So AP refers to physical output per unit of the variable factors used in the process of production. Let me write it down. So AP refers to physical output, refers to physical output per unit of the variable factor used in the of production. So this is what, this is the definition of average product. So it refers to physical output per unit of the variable factors used in the process of production. तो जब फिजिकल आउटपुट में, जब फिजिकल आउटपुट को हम लोग डिवाइड करते हैं पर यूनिट से, किसको, वेरिएबल फैक्टर्स को, दैट इज लेबर को डिवाइड करते हैं, तो वो होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। Now, if we see according to table, that is AP, TP and MP, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि टेबल के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग कहेंगे कि ये AP है, TP है और MP है, और टेबल के अकॉर्डिंग ही हम लोग डायग्राम को डिराइव करेंगे, ओके। Just wait for a minute, I'm coming back.
So this is what. So this is L, this is TP, AP, and this is MP, that is marginal product. Now this is L, that is refers to units of labor. So if we take 1 unit of labor, and in that case production will be 50. Okay, 50, and we can say capital is constant. So here K, that is capital, is constant in all the cases, in the all period. Okay, so if we take 1 unit of labor, okay, so in that case 50 is output, total product, and if we divide 50, so just write it, let me write the all units of till 10 units of labor. Okay, so two, in the case of 2 units of labor, 90 output. Okay, 3 units of labor, 3 units of labor, 120 total output. 4 units of labor, 140 of total output. 5 units of labor, 150 of total output. 6 unit of labor, that is capital. Capital is always constant in all the cases, in all period. Okay, and so in that case 6 unit of labor, 150, and 7 unit of labor, 147. So I will tell you through diagram how total production is first increasing, and then in the second stage, in total production there would be 3 stages. I will tell you in total production through diagram कि total production में 3 स्टेज होते हैं. पहला स्टेज में क्या होगा, आपका टीपी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग रेट्स. मतलब टीपी जो है बढ़ते क्रम से बढ़ेगा, और टीपी जो है फिर बढ़ते क्रम से बढ़ेगा, बट टीपी बढ़ेगा तो बट घटते क्रम से बढ़ेगा. लेकिन लास्ट स्टेज ऐसा आता है कि उसमें टीपी जो है गिरने लगता है. ठीक है, तो फिर पहले पहले हम लोग टेबल के थ्रू देख ले कि जब हम लोग 1 को डिवाइड 50 को डिवाइड करेंगे बाय 1 से, 1 यूनिट ऑफ लेबर, तो ये क्या हो जाएगा 50. ठीक है, जस्ट वेट, लेट मी इरेज दिस, there is not enough space. So this is what 50. Now dividing 90 upon 2 units of labor, this is what 45. Now dividing 120 units, 120 product, 120 total product by 3 units of labor, that is what 40 AP, average product. 140 units of 140 total product divided by 4 units of labor, that is what 35. And 150 divided by 5, that is what 30. And 150 divided by 6, that is what 25. And the last one is 147 divided by 7, that is 21. Okay, so this is what, this is the outcome of AP, average product, 50, 45, 40, 35, 30, 25 and 21. Now okay, तो हमने क्या बताया, TP1 माइनस TP0, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या बताया था MP का, TPN माइनस टीपी एंड एन के जगह पे 1 रखते हैं. 1 का मतलब ये हुआ कि टोटल प्रोडक्शन जो है पहला केस में कितना हो रहा है, माइनस टोटल प्रोडक्शन जब हम लोग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब में. ठीक है, तो मान लीजिए 50 क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन, पहला यूनिट ऑफ लेबर कितना टोटल प्रोडक्ट कर रहा है 50, तो 50 माइनस
फिर जीरो के केस में अगर मान ली यहाँ पे जीरो ले लेते हैं तो इस केस में तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो, तो इट विल गिव अ टोटल ऑफ 50. ओके, नाउ TP2 minus TP1, that is 90 minus 50 is equal to what, 40. Now TP3 minus TP2, that is 120 minus 90 is equal to what, 30. TP4 minus TP3 is equal to what, 140 minus 120 is equal to what, 20. TP5 minus TP4 is equal to 150 minus 140 is equal to 10. TP6 minus TP5 is equal to 150 minus 150 is equal to 0. TP7 minus TP6 is equal to 147 divided by 150 is 147 minus 150 is equal to what, minus 3. In that case, minus 3. So we can see here the output, the total result of MP, that is first is what, 50, that is increasing with increasing rate. Second is what, 40. So here we can say 50 से 40 हुआ, ठीक है, 10 का चिन्ह, फिर 40 से 30 का हुआ 10 का चिन्ह, फिर 30 से 20 हुआ 10 का चिन्ह, फिर क्या हो रहा है, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 10 का चेंज तो हो रहा है, ये क्या हुआ, पहले बढ़ा, फिर अब क्या हुआ, धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 10 का चेंज प्लस 10 का चेंज, फिर ये क्या हुआ, माइनस 10 का चेंज, फिर ये क्या हुआ, माइनस 10 का चेंज, ठीक है, फिर ये क्या हुआ, माइनस 10 का चेंज, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब क्या हुआ, जीरो हो गया, ठीक है, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब निगेटिव हो गया. तो हम लोग इस केस में फिर देखेंगे डायग्राम के थ्रू कि पहले जो है इन द फर्स्ट स्टेज, तो पहला हम लोग देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू देखिए तो ये क्या है, टीपी, ओके, और ये क्या है, एमपी. तो हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं ये मैक्सिमम पॉइंट है एमपी का, तो ये क्या है, जीरो, जिसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है. सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होती है, सैचुरेशन पॉइंट वन पॉइंट होती है वेयर टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज जीरो, ठीक है. तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, ये एक्चुअली डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना नहीं है, ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है. अगर इसको डिवाइड करें फर्स्ट स्टेज, second stage and the third stage. So we can see TP is increasing in the first stage, TP is increasing with increasing rate. In the third stage, TP is increasing with diminishing rate. And the third stage, TP is falling. Okay, TP is decreasing. अब इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, एमपी को